तो हम लोग लेट इतने दिन से इसलिए हुए हैं बिकॉज ये व्लॉग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये व्लॉग मेरे भाई के लिए है। और ये व्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि उसके दोस्त उसके बारे में कुछ भेजे, और उसके दोस्त उसी की तरह थे। उन लोग ने 1 महीना लगा दिया ये इतने ही वीडियोस भेजने के लिए, इसलिए ये व्लॉग लेट हुआ है। सो सॉरी, बट एंजॉय। Adarsh urf Bablu urf Yash. You have 3 names and all 3 of them suck. Hi Ada. Yeah, so happy belated birthday, and I couldn't even be on your video call for your birthday because I was really sick. I guess I just want to thank you for everything that you have done for me. I've had such great memories with you, Ada. Alright, so the job that's been given to me is to come up with something memorable or something nice about you. But the harsh reality here is that you're shit. There's literally nothing nice about you. How do you make my life better? You make it worse. You come up with the silliest Bollywood lines. You have zero humor. Your sarcasm is horrible, but we're still friends. And I don't know why. Well, that's just how life works, I suppose. Like, I'm just stuck with you now. It's quite inspiring to see Adarsh trying to be funny. Love the struggle, bro. But we love you, so we laugh. हाय बिच, एक बार तो मुझे बहुत शौक पता है, बाप बहुत अच्छा बना। और आफ्टर लिविंग विद यू फॉर सो मेनी fucking years, I at least know how to raise a kid now. Maybe not the diapers, but yeah. Anyway, love you, Mandu. And one word that I think describes you, 3 words actually, drama ki queen. Wow. Hey Adarsh. Hi Adarsh. Day. Belated happy birthday. So Adarsh, all my life I've pretty much had just one roommate, and that's been you. And that has been one of the most craziest experiences of my life for me. And I wish we could relive it, go back in time and just relive all of that again. Adarsh, being yours and Harsh's unofficial roommate was one of the most fun parts of my college experience, and I would do it all over again. I really hope that we can meet next year, and you will probably force me to watch a really rubbish Bollywood movie, and I promise that I will watch it and pretend to like it. Have a really great year ahead. Happy birthday again. See you soon. Happy birthday again, Adarsh. Have a great year. Bye. Bye-bye. So I was asked to say 3 lines, something good about Adarsh, and Hello, Adarsh. Okay, if I had to talk about you in 3 lines. 1, you're super obsessed with movies and you always quote like the lamest dialogues from movies at the wrong time. That's probably 1, you're super obsessed with movies, which is just any random movie. It can be the worst movie in the world and you'd still be like, oh my god, it was so good. Don't know how. Second, you quote dialogues which probably no one in the world remembers, not even the actors themselves, at the wrong time. And third, you are no Ludo king. You are not a Ludo star. You are nothing when it comes to Ludo, okay? You just cheat and you get everyone to cheat with you, and then you quote bad movie dialogues to just talk about how great you are, okay? And I really believe
that the last few pictures are enough of a roast of him, because it clearly shows that Adarsh, despite being 25 years old, still does not know how to take pictures and what face to make in a picture. And so we just want to tell him that bro, बहुत time हो चुका है, अब सीख ले picture कैसे लेना चाहिए. Yeah, and I have only 2 other messages for him. One is that Adarsh, I think you should stop obsessing over me. Enough is enough. Please stop seeing baby elephants everywhere. And number 3 is that Adarsh, you're gonna lose the bet. Adarsh, I'm so glad to have a social slut friend like you. I remember this one time you, me, and Kabir were taking a walk in Pune, and we would stop every 5 minutes because we would run into someone you knew, and you would obviously want to talk to them for another 10 minutes. Happy birthday, Adarsh. I'm glad that 7 years ago I decided to do all the work and you got all the marks. It's okay. Hi, loser. So, to roast you, the first thing that came to our mind was the constipated face that you make like all the freaking time. Please have a look at our recreations. Also, it's high time you learn how to smile. Like 1, 2, 3. Eee. Hey Adarsh, well everyone knows it's been 15 years to our friendship, and if we want to talk something good about you, I think that would be there's nothing that's coming to my mind right now. But you must be a good guy, yaar. I think you're a good guy. We have been friends for approximately 15 years now, which is over a decade, and I still can't remember how we actually became friends. I have learned shit tons from you, but the most important things I have learned from you, one of them is how to take the biggest bites out of other people's food. हम लोग के घर पे किसी का भी बर्थडे हो, शुरुआत ऐसे होती है कि मम्मी हम लोग के ऊपर चॉकलेट फेंकती है. तो यश के बर्थडे की भी शुरुआत कुछ वैसी ही हुई. उसके बाद हम लोग ने मम्मी का पॉकेट एम्प्टी करवाया महेश लंच होम में, एंड देर आर अमेजिंग फुटेजेस ऑफ यश डेकोरेटिंग द हाउस ऑन हिज ओन बर्थडे. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Swaha. Swaha. That is how मम्मी wakes up anybody जिसका बर्थडे है. तो अगर आपका बर्थडे है मेरे घर पे सो रहा नहीं. यश का हैप्पी बर्थडे बन रहा है. डालो तो. एक मिनट इसको जोड़ दे. देखो यार सुनो, पापा तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करके भेजा. यश भी और सो गया उधर. कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसका. नहीं तो तुम्हारे बर्थडे के लिए पापा गाया है. कॉपीराइट क्लेम तो वाला बर्थडे थोड़ी मतलब है उसको. Hey Pratyush. Hey, so many people. Hey guys. Oh man, Kunal also joined. Now he's celebrating with his friends. अब हम लोग जा रहे हैं यश के बर्थडे लंच पे. चलो. क्लास फ्रेंड के क्या करेंगे? काकोरी में ट्रेन लूटेंगे. काकोरी में बहुत छोटे-छोटे ट्रेन लूटेंगे. तुम ब्लू क्यों पहने हो? अरे क्योंकि मैं बहुत दिन से ब्लू नहीं पहना था. उससे कैसे बोल रहा है? तुम्हारे इसमें ब्लैक मैच हो रहा है. नहीं, व्हाइट के साथ ब्लू भी अच्छा है. नहीं, जब नीचे डार्क शेड हो रहा है सब ब्लू लग रहा है. ऑफ लग रहा है. सब लोग इतने फैशन में. बेटा का बर्थडे में है, मेरे बेटा का बर्थडे है.
the buffet still on right now? No. अब निकाल लो, अब खाना खाने वाले हो. थे नहीं पैदा करने के लिए. क्या बोलता बाबा आप थे? अरे आप थे पर पटियाला में. नहीं, जब तुम दुनिया में आए तब भी पापा नहीं था. देखो एक घंटे बाद यह कितना 8:30 में हुआ था. तुम 10 बजे आए थे. देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. इसको भी मुंह में बोलिए. One word I'll always describe you as is bhai. And if I had to describe you in one word, I would probably say must. If I had to describe you in one word, I won't be able to. I need more words. One word to describe Adarsh would be mental boy. One word to describe you would be apna Bollywood video. One word to describe Adarsh. Anyway, Adarsh, happy birthday. I just want to say you're a great friend. I'm really happy to know you. I hate saying it, but it's true. And I hope we can see the day where I come into your house and you immediately come down. That's all I want before I die. हैप्पी बर्थडे यश. 25th बर्थ एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ढेर सारा प्यार और हमारा आशीर्वाद. इसी तरह डटे रहो, अपने लक्ष्य के लिए डिटरमिन्ड रहो जैसे अभी तक करते आए हो. भगवान तुम्हें तरक्की दे. एक दिन तुम भी जेठमलानी, कपिल सिब्बल की तरह अपना नाम रोशन करो, दूसरों के लिए आदर्श बनो. इसीलिए तुम्हारा नाम रखा है आदर्श. विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. हैप्पी बर्थडे यस. खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो. तुम तो अपने घर के हीरो हो, है ना? तुम तो घर में घुसते हो और बस हम लोग को एक टांग पे खड़ा कर देते हो. हम हैं, ललिता आंटी है, ऐसा नमक चाहिए, ये टेस्ट चाहिए, ऐसे उसको डेकोरेट करके सर्व करो. हैं, सबको डरा के रखता है ये घर पे, है ना बेटा? लेकिन तुम खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो. यही हम लोग का ब्लेसिंग है. हैप्पी बर्थडे. A vlog is a very personal journey. और ये व्लॉग्स का नाम ही डॉक्टर स्पर्श कुमार है, तो ये मेरा जर्नी. बट ये जर्नी कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट मेरा भाई आदर्श कुमार या उर्फ यश. कहानी शुरू होती है 1995 में, जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी. यश के पैदा होने से पहले मैंने वो पिक्चर देखी थी और फिर यश पैदा हुआ. मैंने हमेशा से एक भाई मांगा था. मम्मी ने बोला था कि अगर भाई चाहिए तो रोज़ एक अगरबत्ती जलाओ भगवान के सामने, और मैं रोज़ जलाता था. जलाते जलाते फाइनली मुझे भाई हो गया. बट मैंने भाई इसलिए मांगा था क्योंकि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो मेरे साथ क्रिकेट खेले, बेसिकली क्रिकेट ही खेले, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को सिर्फ क्रिकेट खेलना था. लेकिन फिर यश हुआ और यश इतना छोटा हुआ कि वो एक क्रिकेट का बैट पकड़ भी नहीं पाता. तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था. बेसिकली ही वॉज बॉर्न टू डू नथिंग दैट आई वॉन्टेड हिम टू डू. एंड आज 25 साल बाद ही इज ग्रोन इनटू अ पर्सन हु डज एवरीथिंग that I can't do or I don't have the balls to do. So I can only say to you in or through this video, because we're men, we can't really speak our emotions out. We're born like that I'm extremely proud of you. So you do you. Don't take advice from anyone else. Just do you, bro.